the cellular biochemical reactions require that the body temperature is tightly controlled. As I have already told you that there is a narrow range of temperature for our body to function normally. This narrow range is 37 degrees centigrade to 37 degrees centigrade. It is 98.4 degree Fahrenheit to 100 degree Fahrenheit. That is, when we measure temperature in centigrade, then the normal range between which our body function normally is 37 degree centigrade to 37.8 degree centigrade. And in terms of Fahrenheit, it is 98.4 degree Fahrenheit to 100 degree Fahrenheit. So, if our body temperature is risen by 2 degrees centigrade during an infection, the activity of white blood cell is increased, while most bacteria in this temperature, they are able to reproduce less. So this small advantage to the host can spell the difference between survival and death. That is why this narrow range is kept during our evolutionary development, because 2 degree increase can be beneficial for us, and it could be a matter of life and death. Now, the thermoregulation is mainly controlled by neurons in the median and medial preoptic nuclei, as well as lateral preoptic nuclei. So, about the control or the thermostat present in the nervous system, we will discuss it little bit later. So, we can say that the skin is one of the major receptor which receives or which perceive the change in temperature outside our body, as well as there are other receptors which sense the change in temperature inside our body. So we can say that the thermoreceptors are the skin, the mucous membrane, and hypothalamus itself. Skin and temperature control. What is the function of skin? As one function I have already stated, that it receives signal from the external environment. Besides that, they form a tough outer layer able to resist the mechanical damage. बाहरी एक कवरिंग के रूप में ये काम करता है, जो कि हमारे शरीर को बाहर के जितने भी फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स हैं, उससे हमारे शरीर को बचाता है. बैक्टीरियाज, फंजाई, वायरसेस, हीट, वाटर, कोल्ड, इन सभी फिजिकल पैरामीटर्स से हमारे शरीर, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को बचाता है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्किन हमारे शरीर का एक बहुत ही मजबूत आउटर लेयर है, बाहरी कवच के जैसे ये काम करता है. It acts as a barrier to the entry of disease caused like microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म की एंट्री को भी ये एक प्रहरी की तरह रोकता है. Forms an impermeable surface preventing the loss of water. हमारे शरीर के अंदर का जो पानी है उसके लॉस को ये बचाता है. Act as a sense organ for touch and temperature changes. ये एक सेंस ऑर्गन है जो कि लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है हमारे शरीर का, जो कि स्पर्शग्राही के रूप में और टेम्परेचर चेंजेस यानी तापमान में परिवर्तन को ग्रहण करके ये हमारे शरीर को संकेत देता है.
So we can say that it acts as a sense organ for touch and temperature changes. Control heat loss through the body surface, और हमारे surface से heat loss को रोकता है. पिछले स्लाइड्स में मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर से या कहीं से भी हीट का जो लॉस होता है वो 3 मुख्य तरीके से होता है: कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन. इसमें इवेपोरेशन भी एक और फैक्टर होता है. तो ये हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन. स्किन की क्या स्ट्रक्चर है और उसके और कौन से फंक्शंस हैं. द स्किन इज़ द ऑर्गन दैट covers your entire body. The skin is made up of 3 layers: the epidermis, the dermis, and hypodermis. The epidermis' main function is to protect the dermis, which contain most of these structures, and protect body from ultraviolet rays. The surface of epidermis is made up of tough, dead cells called the keratin. Now this is the structure of skin. You can see the upper surface, the temperature receptors, the nerves, the dermis part. Below dermis is the hypodermis, which is comprised of fatty tissues. You see arterioles, fat, collagen, fibroblast, muscles, sweat gland present in the dermis region. So this is the structure of human skin. Now about the temperature control in our body. The temperature is controlled by a balance between the heat produced and the heat loss. That is the heat gain and heat loss. We can say that heat production or heat gain is equal to heat loss. जब heat की प्राप्ति वो बराबर होगी हीट के नुकसान से, तभी हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा. इफ़ हीट गेन इज़ more than heat loss, then our body temperature will increase. And if the heat loss is more than the heat gain, then the temperature of our body will decrease. Both the condition can lead to fatal result. जब हमारे शरीर से हीट की जो लॉस है वो अगर ज़्यादा होगी तो हमारा शरीर जो है वो ठंडा होता चले जाएगा, जो कि नुकसानदेही है. और अगर हमारे हीट गेन ज़्यादा हो रहा है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ते जाएगा, जो कि अगेन फेटल होता है, घाती होता है. बॉडी टेम्परेचर इज़ इक्वल टू heat produces metabolically plus heat gain from the environment minus heat loss to the environment. This is again a diagrammatic explanation. Input of heat, receptors receiving the heat when there is a balance condition, when there is an imbalance condition. जब imbalance होता है तो क्या होता है, receptors उसको perceive करते हैं, control center में वो signal को pass करते हैं. As a result control center कुछ information देता है और ये जो information है ये effector systems जो हैं जो action लेते हैं उन
नर्व्स के द्वारा, न्यूरॉन्स के द्वारा हमारे शरीर तक पहुंचा दिया जाता है और इस प्रकार से हमारे शरीर का जो बैलेंस है वो बनाए रखते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है स्टेइंग इन सेम स्टेट, उसी अवस्था में रहना होम्योस्टेसिस कहलाता है। नाउ वी कैन से how the temperature is controlled. In the initial slides, I have told you that there is a center in the brain or a very specific region in the brain. This is called the hypothalamus. It is this hypothalamus which is responsible for controlling so many of the life processes like maintaining the stress for reproduction, for maintaining the feed balance, drinking balance, for so many biological life processes. Hypothalamus plays an important role. Since our topic is on thermoregulation, so we will stick on to that. But before getting into the thermoregulation, I would just like to tell you something about hypothalamus. Now, what is a hypothalamus? Hypothalamus is a small area in the brain present at the base of the brain. The weight of hypothalamus is roughly about 4 grams, while the weight of our brain, rough estimation is on an average it is 1400 grams. So 1400 ग्राम हमारा ब्रेन वे करता है, उसका मात्र 4 ग्राम ही हाइपोथैलेमस का वेट होता है. What is the hypothalamus? Hypothalamus act as an integrator to regulate and coordinate the basic function necessary for life. जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाइपोथैलेमस जो है लाइफ की जो बेसिक प्रोसेस है, जैसे कि खाना, पानी पीना, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस कंट्रोल, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स यानी लड़ना या भागने वाला रिस्पॉन्स, स्लीप वेक साइकिल, ये कई सारी जो बेसिक लाइफ की प्रोसेस है उसको ये कंट्रोल करता है. तो hypothalamus act as an integrator to regulate and coordinate basic function necessary for life such as fluid and electrolyte balance, feeding and energy metabolism, wake-sleep cycle, thermoregulation, stress response, sexual behavior, reproduction, drinking behavior, etc. Hypothalamus is located just behind and between the eyes. The anterior border of hypothalamus is formed by the optic tract and temporal lobes, and the posterior limit of hypothalamus is occupied by the mammillary bodies, is bounded by cerebral peduncle. Hypothalamus is located below the thalamus. It is divided in the middle by third ventricle. It contains a series of well differentiated cell groups called the nuclei, sandwiched between the two major axonal pathway that connects it with the rest of the brain and with the endocrine system. Body temperature is monitored and controlled by the temperature receptor present in the skin and brain thermoregulatory center. Thermoregulatory center is present in the hypothalamus of the brain. These receptor detects change in the temperature of blood flowing through the arteries and capillaries and veins. If body temperature deviates from 37 degrees centigrade, these receptors send signal in form of electrical impulse to the thermoregulatory center that triggers the action which increases or decreases the heat loss.
Hypothalamus acts as a thermostat that makes thermoregulatory adjustment to deviation from the temperature, that is 37 डिग्री सेंटीग्रेड से +-1 अगर होता है तो सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं. Now hypothalamus is made up of anterior hypothalamus, posterior hypothalamus, there are lateral hypothalamus also, and these hypothalamus, they have certain nuclei, centers. So what are the centers present in the anterior hypothalamus? Anterior hypothalamus controls the heat dissipating event. As I have told you that in hypothalamus there are centers which control the heat. If heat increases than the normal range, then signals are sent to the hypothalamus. If the temperature is decreased, then also the signal is sent to the brain. The anterior hypothalamus controls the heat dissipating event. यानी कि anterior hypothalamus जो है वो heat को लॉस करने के जो कंट्रोल है उसको रखता है. If this center is stimulated, the blood vessel of the skin are dilated. यानी हीट लॉस अगर हमें करनी है हमारे शरीर से, हमारे शरीर में अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है और उस गर्मी को हमें बाहर निकालना है तो हाइपोथैलेमस के सेंटर एक्टिव हो जाते हैं. और जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो ये फॉलोइंग कार्य जो हैं वो होते हैं. सबसे पहला काम क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो है स्किन की वो डायलेट हो जाती है, यानी कि फैल जाती है, बड़ी हो जाती है, उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है, thus resulting in a greater flow of blood to the surface. Also, impulses are transmitted to the sweat gland to increase perspiration. और फिर गर्मी को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेट ग्लैंड का फंक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से पसीना आने लगता है. All these physiological responses act to increase the rate of heat loss from the body, thereby prevent the overheating of the body. इन कार्यों द्वारा, इन फिजियोलॉजिकल एक्शन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो बढ़ी हुई गर्मी है उसको कम करने की कोशिश की जाती है. और इन कार्यों द्वारा जैसे ब्लड वेसल का डायलेट होना और जो स्वेट ग्लैंड्स है, पसीने की जो ग्रंथि है वो एक्टिव हो जाता है, जिससे पसीना हमें आने लगता है. तो ये जो प्रोसेस है इसके द्वारा शरीर की गर्मी को कम किया जाता है. पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, दिस सेंटर कॉल्स ऑन हीट कंजर्वेशन इवेंट. और यदि हमारे शरीर के अंदर बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेंज से कम होता है तो ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिसके द्वारा हमारे शरीर से हीट लॉस जो है वो रोका जाए, हमारे शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो बनी रहे. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीट कंजर्वेशन. दिस सेंटर कॉल्स फॉर हीट कंजर्वेशन, thereby it prevents the chilling of the body. हमें ठंड लगने से रोकती है. If the center is stimulated, the blood vessels of the skin are constricted, thus reducing the flow of blood to the surface. In addition to this, surface hair on the body is also stimulated to become erect, thus insulating layer of air surrounding the skin. हमारे शरीर के अंदर के जो बाल हैं ठंड की वजह से वो भी खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से बालों के बीच में जो एयर है वो एक इंसुलेशन की परत बना दे.
as at the same time shivering is brought about through the same mechanism to increase body production। और फिर हमें ठंड लगने लगती है और जब हमारा शरीर ठंड से कांपने लगता है तो इस प्रक्रिया द्वारा भी शरीर के अंदर गर्मी जो है वो पैदा होती है। नाउ दिस इज द डायग्राम which tells about the homeostasis of the in order to control the body temperature। When the body temperature rises above the normal, nervous system signals the dermal vessels to dilate and sweat gland to secrete, as a result of which body heat is lost to the surrounding। जब बॉडी की हीट लॉस हो जाती है तो बॉडी टेम्परेचर इज ड्रॉप टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड होम्योस्टैसिस इज मेंटेन्ड। बॉडी टेम्परेचर जब ज़रूरत से कम हो जाता है व्हेन ड्रॉप्स बिलो नॉर्मल, then again the nervous system signals to the dermal blood vessel to constrict and sweat glands to remain inactive। It causes the erection of the hair, which forms an insulation of air around the body। It also starts shivering, which generates the body heat। If body temperature continues to drop, the nervous system signals the muscle to contract involuntarily। The muscle activity generates body heat, and